Tell me the topic which we have learned in previous class. Climate, right? So the two terms are there in climate. What are the two things? One is weather and another is climate. Very nice. So can anyone tell me what you have learned about weather and what you have learned about climate? Okay, very good. Please tell. Yes, yes. So weather we can say as like for very small time and climate it is for a long time. Anyone else? कोई और example के साथ बता सकते हो? Yes, please. हाँ, weather change instantly, but climate don't change so much as compared to the weather. Okay, so very simply you can very good sit down. So weather is the sum of total of day-to-day conditions, and if you are talking about climate, it is the average of the weather conditions for a long time. So this is the small difference between that. Okay. After then, if we talk about the one term which is mausim, which term is this? This is the Arabic word. Okay. So this type of question is there. Okay, this is which type of word? That is why I have taken this word. Okay, and after then, if you are talking about India, there are several seasons, 4 seasons जो आता है that comes. So यहाँ पे question answer आप लोग ने बनाया है इस chapter का. You all have done the question answer. Okay, so can anyone I mean you all can do the question answer, or I have to tell each and every question answer also yourself? Okay, that is best one. So, but still we can cover some of the questions which you face difficulties to answer, some questions which you don't know how to answer and all. So, if for the quick revision purpose, if we discuss the questions which we have here, let us talk about the questions. What the first question which we have is the question number 1 of my MCQ. एक हम लोग क्विक रिवीजन के लिए क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कस कर लेते हैं. The first question which we have is mausim. This mausim term is which type of word? Arabic word. Very good. So first option, question number 1, option number A will be the correct answer. That is Arabic word. Okay. Second question is asking about which one of the following statement is true about the climate. Here question is asking which of the following statement is not true, is incorrect. It's not correct, it's incorrect. Number A, very good. So it is the day-to-day conditions of the atmosphere, that is not the climate, that is the atmosphere, right? तो इसलिए ये statement जो होगा that will be incorrect. Which one of the following months is the hottest in the India? May. Okay. यहाँ पे अगर और ज्यादा options रहे, यहाँ पे hottest का बात हुआ है, so that is why May is the hottest among all the month. Okay. After then, which of the following place receives maximum rainfall in the world? हाँ? Mizoram. ओके सो ये आप लोग एक बार चेक कर लो, मैसूराम ही होना चाहिए वैसे. ठीक है. आफ्टर देन इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन द मानसून winds blow from what? Sea to land. Very nice. So after then, if we are talking about the short answer question, these are very easy. So as like definition type of question, what is weather, what is climate? So these all things which we have discussed. After then, what does monsoon means? Monsoon का term का मतलब क्या होता है? Monsoon का मतलब क्या होता है? Rain, right? Okay. After then, what type of climate is experienced in India? India का climate system क्या है? Monsoon. Okay. Okay, the climate of India is monsoon. After then, what is Lu? Huh? Blow of hot air, right? Blowing or blow of hot air, right? Huh? Hot and dry rains. Okay, winds. Hot and dry
वाइंड्स भी बोल सकते हैं उसको, सही बात. So these are the small questions. After then true false question is there, then matching question is there. So I hope these all questions you can able to do. Whatever the questions you will not able to do, you can ask. We will discuss about that. Okay. Whoever online also, आप लोगों को कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछो. That can be discussed. Anyone in any long and type question or anything else. Other than I will go further. Asta, Sneha, आप लोग कोई और, शौमिया, रिया, others, दिव्यांशु. So tell अगर किसी को लगता है anyone think any question which should be discussed quickly, check once, go through true false. It may be a short answer, it may be long answer, it may be true false, it may be anything further. Otherwise we will move to the next topic which we have. We are supposed to learn today the another topic, but I thought at least we should revise once the topic which you all have learned, how you all have learned. The next topic which we are going to specially learn today is related to the civics, I think. Chapter 6, page number, tell me. Rural and advocates. Okay, so वैसे इट इज नॉट लाइक दैट कि आज ही आपको बोलना है, आप एक बार देख लेना क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करके. एट दैट टाइम अगर किसी को कुछ लगता है, एनी क्वेश्चंस, इफ यू फील एनी डाउट्स. हाँ, यस प्लीज. Actually, in one class I was online and that Anusha thought that Arabian Sea wine it comes like this too and it does not reach to Delhi and that is why it is so sorry, Bay of Bengal. That is why it is too hot. Sir, Arabian Sea wine is not coming. Arabian Sea's wind, where it is not coming to Delhi? Yes, sir. Sir, actually it is in the that side of India. Which side? North? Which side? If you are talking about India, see, this is the Indian map. North, south, east and west. So which side? Tell me now. Sir, actually Arabian Sea is in the west side of India. And why sir, the winds of Arabian Sea is not coming? The monsoon winds. Winds of monsoon this can come, but it cannot be come to a particular, I mean all the places. It can just come to these places where it is nearby it. If it is nearby of the seas, then it can come. So, but why? Which place you are talking about? That is Delhi. Delhi. So Delhi is here, near about here, na? This so. So Bihar, Delhi, these all places it cannot, it may not become. Sometime it can come also. So it is not necessary. So it is depending upon how the monsoon is. If it is reachable, sometime it can come also, and every time it is not possible to come. So that is why what sir is saying. That is why the weather condition is so hot in Delhi. Okay. As compared to this, maybe sir has explained कि as compared to this location, it is not so much cold. Okay, so wherever the location in this southwest region, those locations will be more colder than this particular locations, which especially lies in this northeast place or northwest place. Okay, so these two places are here you can face more colder as compared to these all upper places. Okay. Anything else? Okay, let's talk about the rural administration. Okay, what this term administration is? Admission, not administration. It is controlled. Okay, so first most important thing, try to understand. अगर आज का डेट में if I am telling which is the highest I mean position or highest positions in government system, IAS और उसके बाद IPS भी उसी के IAS सबसे पहले टॉप में आता है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट. उसको और भी अलग अलग नाम से भी जाना जाता है. Especially if you are talking about this IAS exam, sit properly. So after cracking this IAS exam only, this is happened for the
पोस्ट पोजिशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इसको और भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, डीएम और डीसी से भी जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर भी बोला जाता है, ठीक है, और भी कुछ कुछ नाम्स टर्म्स यूज होता है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सो ये जो है, दिस इज द नाउ टुडेज सिस्टम. बट अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस सिस्टम, व्हाट हैपेंस इन प्रीवियस or till now whatever you have learned is about three or try system of the पंचायत राज. पंचायत राज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? क्या था वहां पे पंचायत राज में? 3 और ट्राई सिस्टम, 3 ट्राई गवर्नमेंट और 3 गवर्नमेंट के बारे में कुछ पढ़े हो आप लोग? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद. These are the 3 system, right? So after that, apart from these elected members, the rural administration at the district level has some permanent members also. तो ये सारी जो है ये तो टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा कुछ परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है. इन दिस चैप्टर we shall study about those all permanent members, as like we know कितना स्टेट है इंडिया में? In book it is given 29, that is why I am asking. How many states are there? Now जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी इंक्लूड कर लिया गया है, राइट? ओके, तो यहाँ पे 27 और 28 कितना है? It's 28 states and 8 union territories. हाँ, so this much of states and union territories are there. So all the states and union territories, जो भी states और union territories है, these all are divided into districts. जैसे अगर बिहार का बात करें तो बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है बटा हुआ है. ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? Which district is this? लखीसराय. हाँ, and again the districts are again divided into subdivisions. Okay, तो यहाँ पे 2011 का अगर हम लोग इसका बात करें, सेंसस का बात करें, so as per the census of 2011, मतलब जब उस समय ये हुआ था, काउंटिंग हुआ था, at that time what was the counting of the government system that it is showing, wherein 640 districts are there total. उस समय का बात है. अभी आप लोग एक बार करंट डेटा देख लेना, ठीक है. अभी आई थिंक हुआ नहीं है, अभी आई थिंक 2022 में होना है शायद. अगर 11 में हुआ है तो आफ्टर 10 ईयर्स 22 हो जाए, कितना होगा? 21 में, तो इसी साल होना चाहिए, ठीक है, काउंटिंग. सो 640 districts was there and 5767 तहसील्स आर देयर, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट्स जो होता है उसके बाद और तहसील्स भी डिवाइड होता है. उसके बाद टाउन्स जो है, दैट इज 7933 टाउन्स आर देयर टोटल. एंड ए डिस्ट्रिक्ट और जिला इज डिवाइड ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, दैट इज द बेसिक थिंग इज द डिस्ट्रिक्ट ओनली, और जिला जिसको बोलते हैं, ठीक है. एंड उसी के बेसिस पे ये डिप्यूट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिप्यूट होते हैं, या डीसी जो जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या आईएएस ऑफिसर्स जो डिप्यूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ओनली. ओके, द सब डिविजन्स आर आल्सो नोन एज अनुमंडल, तहसील, तालुका एक्सेट्रा. ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है. तहसील्स भी बोला जा सकता है, ठीक है, अनुमंडल बोला जा सकता है, एंड तालुका बोला जा सकता है. द सब डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एंड ब्लॉक इनटू विलेज. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे डिवीजन हो रहा है. पहले तो इट इज डिवाइडेड स्टेट वाइज, आफ्टर देन स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू तहसील्स और तालुकात. इसमें एक टर्म्स कोई यूज करना, अनुमंडल, तहसील. अभी जैसे ये सूरजगढ़ को भी शायद अनुमंडल, रामनगर को नहीं, सूरजगढ़ को अनुमंडल घोषित किया गया है ना रिसेंटली, ठीक है. तो अनुमंडल हो गया. आफ्टर देन अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एंड विलेजेस. ओके, सो इस तरह से स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एंड दीज आर द सिस्टम ऑफ आवर रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव. ओके, सो अबाउट दीज ऑल थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर स्पेसिफिकली. फर्स्ट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बात करते हैं, जो डीएम का बात हो रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, ठीक है. इसका इनका जो काम है कैसे होता है या क्या होता है, टुडे ओनली आई थॉट अबाउट इट. लेट अस ट्राई इफ वी कैन डू दिस. विल ट्राई टू विजिट टू ए डीएम ऑफिस, और एटलीस्ट विल ट्राई टू कन्विंस DM if possible to introduce you all, so that he can tell you all
कि about his work, about his duties, how he work, or if possible then we will make a visit to the DM office also, and then to the police stations also, and some of the places wherever we all have in this book. Okay, so we'll try. I'm not ensuring you, but through that you all can interact with the person. You can understand better how are the things he used to do, right? क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है. So first thing what it is the district magistrate, which is the upper post of the डिस्ट्रिक्ट लेवल. सबसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो टॉप मोस्ट पोस्ट में होते हैं, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. सो आंसर विल बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीएम. ओके, ही और सी ऑल्सो कॉल्ड द डिप्यूटी कमिश्नर. उसको डिप्यूटी कमिश्नर्स भी बोला जाता है, देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है. सो अलग अलग टर्म्स यूज होता है यहाँ पे, ठीक है. और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. सो यहाँ पे 3-4 टर्म यूज होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. तो इस तरह से 3-4 टर्म्स हम लोग यूज करते हैं. बोथ ऑल आर सेम. ओके, ही और सी जनरली कम फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. आईएएस का एग्जाम दे के जो है वो आते हैं, आईएएस क्रैक करके आते हैं, ठीक है. द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज ए सेट ऑफ ऑफिसर्स टू असिस्ट हिम और in his work. तो वो अकेले नहीं रहते हैं. जैसे as like if we are talking about the any professions, it is not possible to do alone. So lots of peoples they help the district magistrate to work. Okay, उनका काम में बहुत लोग और भी रहते हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है. फंक्शंस क्या होता है, what are the functions of the district administration? Let us see. Okay, so some of the functions of the district magistrates are or district administrations are as follows. So first most important thing, अभी recently आप लोगों का एक इंसिडेंट हुआ था, याद है, मुंगेर में, राइट? उस समय क्यों हुआ था, why, how? किसी को कुछ आइडिया है? हाँ, क्यों हुआ था बताओ. क्या हुआ था नहीं पता. मुंगेर में जो वो विसर्जन में हुआ था ना, जुलूस निकलते टाइम. आप भी थे, यू आर ऑल्सो देयर. No, what I am asking is what happens to the I mean situations, I mean how this started and what was the end of this, and why I am asking is what is the role of the district magistrate here, what are the functions of DM here. वहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे या सुने होंगे न्यूज में, अगर देखें हैं सडनली उनका वहाँ पे जो भी स्पेशली आईपीएस ऑफिसर थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया तुरंत. और वो जो वहाँ का आईपीएस ऑफिसर थी वो ऑलरेडी कितना 3-4 बार ट्रांसफर हो चुकी थी इससे पहले भी, ठीक है. तो स्पेसिफिकली उनका रोल जो होता है सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. तो लॉ एंड ऑर्डर में क्या आता है, वो तो एक आ गया, उसको मेंटेन करना. उसके अलावा द सेवरल थिंग्स कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. कोई क्राइम हो गया कहीं पे, ठीक है, जैसे एक एक्टिविटीज है आप लोगों का यहाँ पे, देयर इज ए एक्टिविटी इन दिस चैप्टर ओनली, कि क्वेश्चन है कि सपोज यू आर सीइंग समवन discussing or someone I mean planning for the thief purpose. वो कहीं चोरी या डकैती करने के लिए सोचता है और आप उसको सुन लेते हो, तो आप क्या करोगे, what you will do, ठीक है. आप चुप रहोगे या आप कंप्लेन करोगे? हाँ हाँ, वीडियो रखो. क्या अगर पुलिस में जाके बोलोगे what will happen? हाँ हाँ, that due to this reason only the people scared ना. So this is a reality, ये truth होता है. तो नॉर्मली होता है इस तरह से reasons के लिए we don't go and complain against him. But if you are see the factfully the things which we need to do is we should go and complain against it, right? हम लोग को जो करना चाहिए, जैसे इन्होंने बोला रिकॉर्ड करना, इट्स गुड आइडिया कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए सो दैट फॉर द प्रूफ पर्पस, राइट. वो बोल सकते ही नहीं हम तो ऐसा कुछ किए ही नहीं है प्लानिंग, बाद में तो प्रूफ रहेगा ना मेरे पास, राइट. हाँ
that type of people also can be there, but that type of peoples may be there. Okay. So the basic thing that I gone, I mean in advance, that is we have in the last of the chapter. The first most important thing is the maintenance of law and order. तो इस तरह से law and order कोई भी particular state का या कोई भी particular, I mean if we are talking about district wise, is very important thing. कहीं पे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, is this locations or the Munger locations is known as most, I mean difficult or most, I mean this type of zone wherein this type of small incident happens every times. I mean normally होते रहता है, तो इसको ये माना जाता है, इस तरह से जगह माना जाता है. So this should be I mean controlled by the administrative department. Okay, so this is the first. Sir, but we are not in the movie district. We are in Lakhisar district. We are in Lakhisar district. Yes, so I am giving an example of Munger districts. Okay. Lakhisarai district is also a part of the Munger only. Earlier it was a part of the Munger only. After then it's separated from Munger only, na? हाँ, खुलेगा भी नहीं. हाँ. No, but the system is there. So you should not afraid about it. आपको डरना नहीं है. Because this is the things happen na, all depends on the public only. अगर public speak नहीं करेंगे then who will going to solve these all things? If you not speak up today, he will do the crime next time he can be make with you also. That is the saying only. वो करने वाला कर देते हैं, ठीक है? Okay, going further. So first most important thing is to maintain the law and order. Okay, यहाँ पे अगर हम बात करें स्कूल का अगर एग्जांपल लें, दैट इज ऑल्सो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल्स होता है, जो भी टीचर्स रहते हैं टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द क्लासरूम. ओके, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्कूल्स, प्रिंसिपल्स कैन बी द पर्सन. सो हियर एज लाइक दैट if you are talking about district level, the DM is the person, or the functions of the administration is to maintain the law and order of the district. After the maintenance of land records and collections of land revenue. लैंड रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पहले के जमाने में क्या था, जो भी पर्टिकुलर लैंड्स है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ जमीन है, सो उस जमीन में जो ये होगा, मतलब अधिकार जो होगा, दैट विल बी टू माय चाइल्ड ओनली, राइट? ओके, सो दिस टाइप ऑफ डेटा कीपिंग इज डन बाय द administrative department only. And the revenue, इससे क्या होता है कि जिसके पास भी जमीन होता है, they used to pay the tax to the government. वो जमीन के लिए टैक्स पे करते हैं, खेती करने के लिए टैक्स पे करते हैं. हम लोग हर चीज में टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और वही टैक्स का जो पैसा होता है गवर्नमेंट यूज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल, राइट? सो इवन आप जो मॉर्निंग में टूथपेस्ट यूज करते हो ना, उसमें भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट गवर्नमेंट को देते हो, जो टूथपेस्ट का कॉस्ट पड़ता है उसके अलावा, राइट? जो हम लोग खेती करते हैं उसमें भी जो भी सामान यूज करते हैं, ऑल द इवन लैंड्स का भी टैक्स होता है, तो दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू. उसमें रेवेन्यू बोला जाता है इसका, लैंड का. नहीं दोगे तो मिलेगा ही नहीं सामान. जाओ मार्केट में, बोलो एक कुछ बिस्किट चॉकलेट खरीदते हो ना, चॉकलेट खरीदते हो, एक 10 रुपए का जो चॉकलेट आता है उसी में टैक्स इंक्लूड रहता है. उसको बोलना कि एक्चुअल प्राइस है जो टैक्स लेस करके वो दे दो मेरे को प्राइस में, बोलना 8 रुपया दो, 8 रुपया में दे दो, दे देगा. विल ही गिव? शो. हाँ, so this is the thing you have to pay. वो that is something different. That is then you are going beyond the tracks. So that is different thing. So basic thing is the after the maintaining law and order, maintaining the data of the land records. तो किसके पास कितना जमीन है उसका डिटेल्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ निशिकांत, ऐसा नहीं होना चाहिए कि निशिकांत का जमीन पे हम कल का डेट में जाके बोल दिए तो जमीन मेरा है, ठीक है? तो फिर गवर्नमेंट आएगा लिस्ट लेके कि नो दिस इज द निशिकांत लैंड, निशिकांत का पापा का नाम यहाँ पे है तो निशिकांत का है, ठीक है? सो गवर्नमेंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है? एंड द टेक्स्ट, हु आर पेइंग, हु आर नॉट पेइंग, and how much paying, those all records they have. So maintaining of record is the work. Providing civic amenities to the peoples. तो civic amenities का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग का राइट्स है, हम लोग का अधिकार है,
ठीक है, एज पर द लॉज, सो उसको प्रोवाइड करना, ठीक है, so that we should get. Okay, so to ensure that everyone is getting as per their requirement or as per the constitutional things which they have, as like constitution में हम लोग का बहुत सारा rights है, ठीक है, right to education है और भी जो भी rights है, so those all rights according to that constitutions the peoples of the country should have get those all facilities. Okay, so that is also the one of the functions of the administrations. Okay, next is to monitor and develop developmental projects. Monitoring the developmental projects का मतलब होता है you all might have aware about that कि government used to run several projects, several developmental projects for all the people, for all the जनरल पीपल, सबके लिए अलग अलग इस तरह से कुछ ना कुछ ये निकालते रहते, स्कीम निकालते रहते, तो दोज ऑल स्कीम शुड बी, दोज ऑल प्रोजेक्ट्स शुड बी आई मीन मॉनिटर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. वो उसका ये करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, दे यूज्ड टू चेक इज ऑल आर गोइंग एज पर द आई मीन रिक्वायरमेंट और नॉट. जैसे कि गवर्नमेंट का बहुत सारा इस तरह से स्कीम्स है, फार्मर के लिए है या स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, गर्ल्स के लिए है, ठीक है, तो वो दोज ऑल थिंग्स आर रीचिंग टू द पब्लिक और नॉट. Okay, those all benefits the peoples are getting or not, so that is also one of the functions of the administration. After then supervising the panchayat raj institutions, so जो भी पंचायत राज institutions है उसका भी supervision करने का काम इनका है. After then providing relief works during disaster situations, तो मान लीजिए कहीं कुछ इस तरह से disaster का situations आ जाता है, at that time also that is the work of the I mean this administrations only to support those all people. जैसे कि यहाँ पे बाढ़ वगैरह अगर कभी आ गया, so it is the responsibility of administration to help those people to provide foods, to provide the required things of that particular locality. So these are the some of the functions of a particular administration. Okay, यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें, सबसे टॉप में जो आता है that is the district magistrate और DM जिसको बोलते हैं, that is first at the top most. Okay, and this is now again divided into three basic categories, this administration. Main function is the of district magistrate or DM जिसको बोलते हैं. Three department are there. Maintenance of law and order, first department, which is the work of police or this type of force. Second is the maintenance of land records, and third is the civil amenities and development, जिसके बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल. ठीक है, होमवर्क में आप लोग इस चैप्टर को एक बार लर्न करना, सेल्फ स्टडी करना. ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का क्लास में. ठीक है, सो योर होमवर्क इज टू लर्न दिस चैप्टर.